हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इट विल बी द पार्ट सेकंड ऑफ द बेसिसिटी ऑफ एमाइन्स. एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन्स. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था बेसिसिटी ऑफ एमाइन्स का फर्स्ट पार्ट. वहां पे मैंने कहा था डियर स्टूडेंट्स, बेसिसिटी ऑफ एमाइन्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3NH2 है. दिस इज प्राइमरी अमाइन और NH2. व्हेन इट डोनेट्स इट्स लोन पेयर, फॉर एग्जांपल वहां पे मैंने आप लोगों को कहा था व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर हैज एन एम्फोटेरिक नेचर. हियर इट एक्ट्स एज एन एसिड, इट डोनेट्स ए प्रोटॉन, और इन अदर वर्ड्स ammonia donates its lone pair of electrons to that very proton, and there is the formation of RNH3 positive plus OH negative. ये मैंने यहाँ पे वहां पे रिएक्शन कही थी. डियर स्टूडेंट्स, वहां पे मैंने एक कंसेप्ट कहा था, द stability of the ammonium cation. This is the ammonium cation will determine us the stability of the, will determine us the strength of the base. Mind it, my dear students. The stability of the ammonium cation, the stability of the ammonium cation will determine us the strength of the base, will determine us the strength of base. Mind it. बेसिसिटी ऑफ एमाइन्स में ये मैंने कहा था. और एक चीज मैंने कही थी, वहां पे कहा था देयर इज ए रिलेशन PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB. वहां पे मैंने कहा था जितना ज्यादा KB का वैल्यू होगा उतना ही कम PKB का वैल्यू होगा. अगर KB ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, और उस बेस का PKB वैल्यू कम होगा. PKB वैल्यू कम होगा. अगर स्ट्रॉन्गर बेस होगी तो PKB वैल्यू कम होगा लेकिन KB वैल्यू ज्यादा होगा. और अगर वीकर बेस होगी तो KB वैल्यू कम होगा लेकिन PKB वैल्यू ज्यादा होगा. ये दो कंसेप्ट्स मैंने वहां पे कहे थे. द स्टेबिलिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ एन अमाइन, the strength of an amine is determined by the stability of the ammonium cation, or it, other words, it is known as conjugate acid. Conjugate acid, the stability of the conjugate acid will determine as the strength of the base. More stronger the base, more the stability of the ammonium cation or conjugate acid. More stable the conjugate acid, more will be the, more stronger will be the base. ये basicity of amines में हमने discuss किया था. Now, my dear students, here second part of the basicity of amines. Here we will discuss basicity of aliphatic amines. Aliphatic amines, primary amine or NH2, secondary amine R2NH, tertiary amine R3N, या CH3NH2, CH3 यहाँ पे CH3N, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे मैंने अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप ले लिया. दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शियरी. 1 नॉट, 2 नॉट एंड 3 नॉट. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. माइंड इट, माय डियर स्टूडेंट्स, एमोनिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. यहां पे NH, CH3NH2, CH3CH3NH, CH3CH3N. In case of ammonia, we are saying that
all the three types of amines are the derivatives of ammonia. यहाँ वो मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया को आर ग्रुप से रिप्लेस कीजिए, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ एमाइन्स. ये हमने डिस्कस किया था. My dear students, mind it, all the three types of amines, primary, secondary, and tertiary, are more stronger bases than ammonia. All the three types of amines are more stronger bases than ammonia. Why? Because of the presence of electron releasing group. This is known as electron releasing group, or we can say electron donating group भी इसे कहा जाता है. CH3 is an electron donating group. Methyl groups or alkyl groups are electron donating groups. These are electron donating groups. These have plus I inductive effect. Books में लिखा होगा due to the presence of plus I effect in case of amines. Amines, all the three types of amines are stronger bases than ammonia. Now आप खुद डिस्कस कर सकते हो कि with respect to primary, secondary and tertiary amine, if we will consider plus I effect, electron donating or electron releasing inductive effect, इन तीन amines में से कौन सा स्ट्रांगर बेस होगा? क्वाइट एविडेंट, टर्शियरी के पास 3 अल्काइल ग्रुप्स है, 3 electron donating groups will be there. Now nitrogen has more tendency to donate that very lone pair because we are saying that amines are Lewis bases. They have the tendency to donate that very lone pair. Tertiary के पास, nitrogen के पास lone pair of electron होता है. Now it has more tendency because 3 alkyl groups are there. In case of secondary, 2 alkyl groups are there. And in case of primary, only 1 alkyl group is there. Now the order will be like this. आप लोग 3 naught greater than 2 naught greater than 1 naught, and which in turn is greater than ammonia. The basicity order of amines should be in this very manner. But my dear students, it has been found only in gas phase. The basicity order of amines in gas phase is tertiary is greater than secondary, which in turn is greater than primary, and which in turn is greater than ammonia. Ammonia का सबसे कम है because वहाँ पे कोई alkyl group नहीं है. That is in gas phase. Now we will see in aqueous phase. What is the order of basicity of primary, secondary and tertiary amines? What is the order of basicity of aqueous phase? means in water. यहाँ पे ही मैंने आप लोगों को भी कहा था my dear students, अगर हम किसी amine को RNH2, for example here it is primary amine, we are treating it with water, there is the formation of RNH3 positive plus OH negative. ये मैंने भी कहा था. मैंने कहा था the stability of the ammonium cation will determine us the strength of the base. Always remember that. In aqueous phase, the stability of amines, primary, secondary as well as tertiary, is determined. The strength of amines, primary, secondary and tertiary, is determined by the stability of ammonium cation, or we can see the conjugate acid of the base. The stability of conjugate acid will determine the strength of the base in aqueous phase. अभी तक तो हमने gas phase में देखा था. There is only plus I effect. Plus I effect will determine as the basicity of amines, basic order of amines. वहाँ पे tertiary greater than secondary, greater than primary, greater than ammonia. But in aqueous phase, the stability of the ammonium cation will determine the strength of primary, secondary and tertiary amines. Dear students, the stability of the ammonium cation in aqueous phase depends upon 3 factors. Three factors are responsible for determining the stability of ammonium cation in aqueous phase. Mind it. First one is plus
I effect of alkyl groups. In aqueous phase, we are saying that mind it, remember it, and note it. In aqueous phase, the stability of the ammonium cation determines us the strength of the primary, secondary, as well as tertiary bases, or generally we will say that base. First one is, we are saying that the stability is determined by three factors. One is plus I effect of alkyl groups. Second one is solvation effect. Solvation effect. And third one is steric effect, or we can say steric hindrance. My dear students, what are the factors which are responsible for determining the stability of ammonium cation in aqueous phase, or what are the factors which will determine us the stability of amines in aqueous phase? There are three factors which are responsible for determining us the stability of the ammonium cation or the strength of the bases. That is plus I effect of alkyl groups, solvation effect, steric effect. We will discuss them one by one. Plus I effect of alkyl groups, that is same as that of in the gaseous phase. Plus I effect. First one is plus I effect. यहाँ पे CH3 NH2 CH3 NH CH3 CH3 N CH3 CH3. अभी मैंने एक्सप्लेन किया इन केस ऑफ विद रेस्पेक्ट टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इन एक्वस फेज. अभी तो मैंने गैसियस फेज में डिस्कस किया, हमें सिर्फ प्लस आई इफेक्ट डिस्कस करना है. यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स है, और यहाँ पे एक ही है. विद रेस्पेक्ट टू प्लस आई इफेक्ट अलोन द बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ एमाइन्स विल बी 3 नॉट greater than 2 not greater than 1 not, because in this very case 3 alkyl electron releasing groups are there. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही है. This is the plus I effect in aqueous phase. Now my dear students, second one is solvation effect. Solvation effect. With respect to solvation effect, in aqueous phase of primary, secondary and tertiary amines, what will be the order? What will be the order? देख लीजिए my dear students. For example, there is RNH2, there is primary amine. We are dissolving it in water. There is the formation of ammonium cation, RNH, H and H positive, और NH3 positive जो मैंने अभी कहा था, plus OH negative, mind it. When with respect to solvation effect, or solvation effect is in other words extent of hydrogen bonding. When primary amines are dissolved in water, there is the formation of this very ammonium cation. But primary amines we are dissolving in water, mind it, वहां पे एक ही water molecule नहीं है, plenty of water molecules are there. Ammonium cation is in turn stabilized by, there is the formation of this very ammonium cation in case of primary amine. Has 3 hydrogen atoms, and that is stabilized by the extent of hydrogen bonding with water. Ammonium cation of primary amines have 3 hydrogen atoms. When it is dissolved in water, now there is the formation of ammonium cation. When primary amines are dissolved in water, there is the formation of 3 hydrogen bonds with water, because 3 hydrogen atoms are there. This is hydrogen bond with water molecule, this is hydrogen bond with water molecule, this is hydrogen bond with water molecule. आप लोगों को पता होना चाहिए, nitrogen, oxygen and fluorine, these are the 3 elements which will take part in hydrogen bonding. यहाँ पे oxygen और hydrogen के बीच में hydrogen bond है, oxygen hydrogen. Now this very ammonium cation is stabilized by hydrogen bonding. अब हम secondary का देख लेंगे, R2NH
plus HOH. There is the formation of this very ammonium cation. यहाँ पे my dear students ये lone pair of electron डोनेट कर लेगा इस प्रोटॉन को. यहाँ पे ये इसके पास अपने दो हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन एटम है. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ RN, यहाँ पे H और यहाँ पे H पॉजिटिव. RNH पॉजिटिव. एक तो अपना हाइड्रोजन एटम है, एक ये एक्सेप्ट किया और प्लस OH नेगेटिव. लेकिन इन दिस वेरी केस there will also be the hydrogen bonds, but two hydrogen atoms are available in this very case. In the case of ammonium cation of secondary amines, in the case of ammonium cation of secondary amines, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए? 2. नाउ माइंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे हम टर्शियरी अमाइन. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ सॉल्वेशन इफेक्ट ऑफ टर्शियरी अमाइन. नाउ R3N plus HOH means water. There will be the formation of R3N positive H. Now, in this very case, there is only one hydrogen bond, because only one hydrogen atom is present in the ammonium cation of tertiary amine. Now, here with respect to solvation effect, not with respect to plus I effect. In case of plus I effect, जो tertiary amine था, that was more stable. That was ammonium cation of tertiary amine was more stable. Ammonium cation of secondary amine was second in the order, and ammonium cation of primary amine, because in case of tertiary amine plus I effect 3 alkyl groups are there. But solvation effect में क्या होता है? We are dissolving the amines in water. At that very time, जब ammonium cation की formation हो जाती है, वो ammonium cation in turn is stabilized by hydrogen bonding. In case of tertiary amine, 3 hydrogen bonds. In case of secondary amine, ammonium cation of secondary amine 2, and in case of ammonium cation of tertiary amine, only 1 hydrogen bond is there. That is, my dear students, with respect to solvation effect. With respect to solvation effect, primary will be greater than secondary, in turn will be greater than tertiary. अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर, with respect to plus I effect, in case of aqueous phase, या in case of gaseous phase, tertiary is more greater than secondary, which in turn is more greater than primary. लेकिन solvation effect में कहानी ही बदल दी. यहाँ पे hydrogen bonding ने. Now solvation effect, with respect to solvation effect, if we will take the solvation effect alone, at that very time primary is greater than secondary, which in turn is greater than tertiary. Why? Because the strength of the base is determined by the stability of the ammonium cation. यहाँ पे ammonium cation ज्यादा stable है और secondary का कम, with respect to tertiary का सबसे कम. Now this is the solvation effect. This is the solvation effect. Third effect, my dear students, that is steric effect. Steric effect means, or steric hindrance. Third is steric effect. Steric means crowdiness. Mind it. For example, आपके पास एक क्लासरूम है, क्लासरूम में स्पेस है सिर्फ 30 बच्चों की. माइंड इट, क्लासरूम में स्पेस है सिर्फ 30 बच्चों की. अगर कोई बंदा आ जाएगा, वो उस क्लास में दाखिल होना चाहेगा, तो प्रॉब्लम तो होगी ही. हाँ, क्लास में सिर्फ कितनी स्पेस है? 30 बच्चों की. अगर 2-4 बंदे आ जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी. दैट इज क्राउडीनेस. सेम इज द केस हियर. स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक इफेक्ट. हाँ, अगर इसमें सिर्फ 2-3 बच्चे होंगे, 2-4 बच्चे इजीली दाखिल हो सकते हैं. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, this is primary amine RNH2. This is secondary amine R2NH, and this is tertiary amine R3N. In case of primary amine, only one alkyl group is there. अगर यहाँ पे कोई आना चाहेगा, for example proton, we are seeing that proton, यहाँ पे lone pair of electron है. There is the formation of RNH3 positive. The steric hindrance, the steric effect offered by R will be less, because in case of secondary, अगर यहाँ पे we will say that, my dear students, H positive.
It is accepting H positive. There is the formation of RNH2 positive. And in this very case, R3N positive H. The steric hindrance suffered by H positive with respect to tertiary amine will be more crowdiness, because there are three alkyl groups, three bulky groups. In other words, in chemistry we are using the term bulky. Three bulky groups are there. In case of secondary, two. In case of primary, only one. That means with respect to steric hindrance, the steric effect offered by the three alkyl groups in case of tertiary amine will be more, while as in case of secondary amine less, and सबसे कम primary amine में. With respect to steric effect, the strength of the bases is primary will be greater than secondary, will be greater than tertiary, because steric hindrance in case of tertiary amines is more, secondary amines में उससे कम, और primary amines में सबसे कम. अब क्या? The three factors which will determine us the stability of the ammonium cation is plus I effect of alkyl groups, solvation effect या extent of hydrogen bonding भी उसे कहा जाता है, steric effect और steric hindrance. First one में हमने देख लिया my dear students, first effect में हमने देख लिया कि फर्स्ट इफेक्ट यहां पे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को. फर्स्ट इफेक्ट में हमने देख लिया टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी. ये हमने फर्स्ट इफेक्ट में देख लिया, प्लस आई इफेक्ट. सेकंड में प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी, मतलब विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेशन इफेक्ट इन एक्वस फेज. थर्ड में थ्री फैक्टर्स, यहां पे भी प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी. स्टेरिक इफेक्ट में क्योंकि tertiary amine में steric hindrance ज्यादा है. Mind it, my dear students, these are the three factors which are determining us the strength of bases or the stability of the ammonium cation in aqueous phase. From the above factors, mind it, my dear students, experimentally it has been found that secondary amine is second in all the three cases. That is why it has been found that secondary amine is more basic, because all the factors are favorable for secondary amine. In case of aqueous phase, मैं aqueous phase की बात कर रहा हूं. Aqueous phase means in water. Secondary amine, remember that in aqueous phase all the three factors are favorable for secondary amine. But that means secondary amine is more basic in character than primary as well as tertiary with respect to aqueous phase. But the stability of primary and tertiary amine is determined by the presence of R group. Mind it, R group कौन सा है? R group कौन सा है? Stability order of primary and tertiary amine. As you know, मैंने अभी कहा all the three factors are favorable for secondary amine. इसका मतलब है कि secondary amine is more basic in character than primary as well as than tertiary. But the stability, but the strength of primary and tertiary amine is determined by R group. अगर R group methyl है, अगर R group methyl है, at that very time we will say that primary will be greater than tertiary, which in turn will be greater than ammonia. Ammonia की stability सबसे कम है, both in aqueous as well as in gaseous phase. Mind it, मैं क्या कह रहा हूं my dear students, if R is CH3, that means CH3 whole twice NH will be greater than CH3 NH2 will be greater than CH3 whole thrice N, and which in turn will be greater than NH3. Mind it, this will be the order. If R is CH3 in case of aqueous phase, in case of aqueous phase, यहाँ पे मैं आप लोगों को explain कर लूँगा क्यों? Why? Because if R is methyl, in aqueous phase, if R is methyl in aqueous phase, mind it, hydrogen bonding जो हमने second factor
dominates over steric effect, our plus I effect. Mind it. With respect to plus I effect, tertiary ज्यादा स्ट्रांगर होता है सेकेंडरी से, which in turn is more stronger than primary. With respect to hydrogen bonding and steric effect, primary, secondary, tertiary. सबसे पहला नंबर प्राइमरी को, आफ्टर दैट सेकेंडरी, आफ्टर दैट टर्शियरी. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, पूरा इन एक्वस फेज, माइंड इट कि all the factors are favorable for secondary amine. That is why secondary amine is more basic in character than primary as well as in tertiary. But the stability, but the strength of the bases of primary and tertiary is determined by the presence of R group. अगर R group मिथाइल है at that very time, primary ज्यादा होता है tertiary से. इसी का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर R मिथाइल होगा तो at that very time हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेट कर लेगा our प्लस आई इफेक्ट. विद रेस्पेक्ट टू प्लस आई इफेक्ट टर्शियरी ज्यादा होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्राइमरी टर्शियरी से ज्यादा होता है. दैट इज वाई विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट प्राइमरी टर्शियरी से, सेकेंडरी से भी और टर्शियरी से भी ज्यादा होता है. लेकिन मैंने कहा कि एक्वस फेज में अगर आर मिथाइल होगा तो तब सेकेंडरी ये आप दिमाग में रख लीजिए कि with respect to primary, secondary and tertiary amine is in aqueous phase, secondary सबसे ज्यादा होता है. अब R डिटरमाइन कर लेगा कि प्राइमरी ज्यादा स्टेबल है या टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है. अगर R मिथाइल होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर लेगी प्लस आई इफेक्ट से. एट दैट वेरी टाइम ऑर्डर विल बी दिस. हाँ, नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है. लेकिन अगर आर ग्रुप, अगर आर, यहां पे मैं लिखूंगा उसको नोट कीजिए. अगर इफ आर इज इथाइल मीन्स C2H5 or propyl and so on. C3H7. Minded, my dear students, C3H7. At that very time, secondary greater than tertiary, greater than primary, greater than NH3. Because अगर यहाँ पे, for example, it is CH3, CH2 whole twice NH will be greater than CH3, CH2 whole thrice N, which in turn will be greater than CH3, CH2 and H2, and which in turn will be greater than CH3 अमोनिया से. My dear students, ये इस तरह से आप लोग याद रखोगे कि अगर R छोटा है तो प्राइमरी मतलब छोटा एमाइन टर्शियरी से ज्यादा स्टेबल होगा इन एक्वस फेज. अगर R बड़ा है तो टर्शियरी प्राइमरी से ज्यादा होगा, और सेकेंडरी बोथ केसेस में सबसे ज्यादा है, बेसिक है. मैंने यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कहा कि अगर R इथाइल है या प्रोपाइल है, मतलब सेकेंडरी विल बी ग्रेटर देन टर्शियरी, विच इन टर्न विल बी ग्रेटर देन प्राइमरी. क्यों यहाँ पे ऐसा होता है? बिकॉज प्लस आई इफेक्ट इस टाइप डोमिनेट कर लेगा, डोमिनेट्स ओवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बस, that is all about basicity of amines in aqueous phase as well as in gaseous phase. याद रख लीजिए, रिकैप्चुलेट कीजिए. इन gaseous phase टर्शियरी वहां पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट होगा, गैसियस फेज में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट होगा, और अगर एक्वस फेज में होगा तो 3 इफेक्ट्स विल बी देयर. वहां पे stability of ammonium cation will be determined by with the help of 3 factors: plus I effect, solvation effect and steric effect. और उसी अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर लेगी कि कौन सा एमाइन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है. वहां पे मैंने आप लोगों को कहा कि माय डियर स्टूडेंट्स, if R is methyl at that very time, order is secondary is greater than primary, is greater than tertiary, is greater than ammonia. If R is higher group,
इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, एट दैट वेरी टाइम द ऑर्डर विल बी दिस इन एक्वस फेज. इन गैशियस फेज, माइंड इट, इन गैशियस फेज टर्शियरी हमेशा ज्यादा सेकेंडरी, एंड ये उसका ऑर्डर होगा कहां पे, गैस फेज में. माइंड इट. और एक चीज याद रख लीजिए, अगर यहां पे सॉल्वेंट वाटर होता है, एक्वस फेज में सॉल्वेंट वाटर होता है, गैशियस फेज में कोई गैस होगा, या व्हाट वी कैन से, फॉर एग्जांपल द गैस विल बी CHCl3 या CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड. दिस इज व्हाट वी कैन से. और बेंजीन भी हो सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है. अगर कहीं पे आप लोगों को दिखाए, वहां पे एग्जामिनर कहेगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन्स इन बेंजीन, एट दैट वेरी टाइम इट विल बी लाइक दिस. बस सिर्फ एक्वस फेज में आप लोग देख लीजिए, ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा. वहां पे आर ग्रुप डिटरमाइन कर लेगा प्राइमरी और टर्शियरी की. सेकेंडरी ऑलवेज मोर स्टेबल होता है with respect to primary and secondary. That's we have explained here the basicity of aliphatic amines, basicity of in gas phase as well as in aqueous phase. Now after that we will discuss the basicity of aromatic amines, basicity of aromatic amines. तब तक के लिए गुड बाय.